So I thought, why not create a platform that caters to that need? So I approached him with the idea that, you know what, I want to do this. ज्यादातर उनका ये होता है, I'm a very introvert and shy person. शाहरुख खान कहता है. Yeah, because I would choose not to answer. I would choose not to answer. One of the things that podcast taught me was cold emailing. There are two people who come to my mind. Three actually. Three Good. actually. So hello, welcome and assalamu alaikum everyone. मेरा नाम है नवाज अली खान and welcome to the Aeenak podcast. Today on the podcast, we have a podcaster who will be talking to another podcaster on how to build a podcast on this podcast. So please welcome Nihal. Thank you, Nawaz, for inviting me to the Aeenak podcast. I have been waiting for months to join you, and this is this is sort of a huge thing for me to be invited to someone else's podcast, because usually podcasters are the ones inviting people over. So this is a big deal for me on a personal level. It just shows that I am doing something worth doing. So again, I'm grateful to the Aeenak podcast. And thank you, Nawaz, for inviting me today. Starting में you have made me so happy. तारीफ के through. I mean, you deserve it. मेरे पे आना तो मेरी भी करना. So introduction में इतना ही बताना चाहूँगा कि भाई की अपनी podcast है और बराबर में हमारे डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं. So पहले बताओ यार, क्या है पॉडकास्ट में तुम्हारी, कौन आता है, किस मतलब बेसिस क्या है पॉडकास्ट? Okay, so नेम है डिकोडिंग विद निहाल. डिकोडिंग विद निहाल. वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर देना. अब मैं नवाज से ही पूछ लेता हूँ. नवाज, ओरिजिन स्टोरी चाहिए या ओवरव्यू चाहिए अभी? Origin story. Origin story started when during my second year in engineering. कुछ करना है, कुछ करते हैं. So this is okay. So people need to realize that this is not my first venture. Okay, this is not something that इससे पहले भी फेल हो चुके हो. बहुत बार. I used to do writing. मैं blogs लिखता था. But there was that fire, that passion. कि ठीक है, I'm going to college. उसके अलावा मैं कैसे अपने आप को दिखाऊं लोगों को that I'm doing something, I'm pursuing something. So जब मैं second year में था, throughout my first year I had joined societies, college में societies. So I was Jamia में. I was a part of Society of Automotive Engineers, Jamia Millia Islamia. So उसमें you get to see people working, to better the society. हम कैसे engage कर सकते हैं लोगों को, and webinars करवाना, and ये that too seemed a bit cliche to me. Seminars तो चल ही रहे हैं, webinars होते रहते हैं, group discussions हो रहे हैं. What is that one thing that will stay forever to the audience, that they can come back and watch it again and again, and get in touch and get started with what they want to do? Because I initially had doubts of my own, questions of my own, and I wanted someone to answer them. Okay, I wanted कि यार मुझे ये करना है. What should I be doing? What is the right step? So I thought, why not create a platform that caters to that need? And I saw that Jamia में कोई नहीं कर रहा है वो. So why not come up with it? And I would like to give shout out to one person, which is my friend Mozam Farooq, who helped me, who is also the co-founder of Decoding with Nihal. And had he not been there to support me, because he was a year elder to me, he was my senior. So I approached him with the idea that, you know what, I want to do this via the society, because I had no idea there back then how to वो society का ही part था. ठीक है. So I said, यार ऐसा करते हैं, society के through operate करते हैं, and let's see where it goes. So he was very much onto the idea. He said, यार करते हैं. I was waiting for someone like you. Let's do this. So we started, and we started with our own faculty. So the first podcast that I ever made was with my professor, Mr. Abid Halim. So the catch here was, recently he had been amongst the top 2% scientists in the world. Okay. So I knew this is a big fish, and I had to get it. And okay, so I was very new to writing as a podcaster, and I was very new to talking to people. So everyone who's watching me right now, please know that I am a super introvert. नहीं लगता है. सब यही कहते हैं. ठीक है. जितने भी, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जितने भी आउटगोइंग लोग दिखते हैं, जो स्टेज पे बोलते हैं, जो कॉमिक्स होते हैं, ज्यादातर उनका ये होता है, I'm a very introvert and shy person. शाहरुख खान कहता है. Because नवाज, एक चीज मैंने रियलाइज की, being an introvert, I realized कि दुनिया आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगी. ओके मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार, मैं बैठ जाता हूँ.
You know what, it will come to me. हम्म, I realized that कोई my सर्व नहीं करने कोई वाला है. सर्व नहीं करने वाला, and my ambition, that was the podcast till that moment, is greater than my fears. हम्म, You know, I had to make this हम्म, and challenge myself to come out on the other end and face my own self कि भाई come and grab it, बिल्कुल. because no one is going to be बना लेंगे, हो जाएगा, you know. हम्म, So मुझे नहीं पता था कैसी चीजें होती हैं, कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, नथिंग. आई आस्क्ड माय प्रोफेसर, सर मैंने ऐसे प्लान किया है और मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा वाया गूगल मीट और जूम मीट, हम्म, एंड हम उसकी क्लिप्स निकालेंगे. तो he understood it in sort of a webinar manner, ठीक because है. that what was the routine was going on. हम्म, So he said मुझे ऑडियंस चाहिए. मैंने कहा सर सिर्फ मैं रहूंगा, आप और मैं बात करेंगे, कुछ चीजें हैं मेरी, and we will get started from there, and then I'll release it and then you can watch it. हम्म, तो अब तक मुझे काम करते करते, you know, other things that I had failed in other things, उसमें काम करते करते इतना एक्सपीरियंस था that whatever the first thing you produce, उसमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे, it will only be because you tried it the first time and people are, you know, gung ho over excited to it. see. Yeah. Yeah. तो फर्स्ट वीडियो I- मैंने निकाली I felt 2 it the मिनट की, same. 2 मिनट की क्लिप निकाली मैंने, हम्म, and it blew out of proportions, 500 views straight. हम्म, That is a big thing for Obviously, I someone know. starting from zero. That is, I I was know. like, but I did not let it get to my head. I called Mozam and I said, listen, ये पहले दिन की चांदनी है, इसके बाद जो वर्क पुट ऑन करना है ना, डाउन वो जाता डाउन है. जाएगा, सो वहां नहीं करना. एंड ही वाज अंडरस्टैंडिंग, ही वाज लाइक यार पता है हम दोनों को, हम्म, लेट्स गेट वर्किंग. हम्म, So we, in our right minds, knew that releasing a 1 hour podcast at that point कोई नहीं देखेगा. हम्म, So we stick to 2 minutes clip, 1 minute clip. okay. This experience has come from me failing in other things. हम्म, Okay, it was not like एक घंटे का निकाल देते हैं, people will come and watch it. हम्म, किसके पास है टाइम? हम्म, We saw the response के response अगर इस पे अच्छा आता है इन clips पे, that's when we will upload. okay, cool. ठीक है? Okay, honestly, learning lesson में सीख रहा हूँ. Definitely, definitely. हाँ, Right? नहीं आया. हाँ, क्लिप्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस था. They were crossing 200, हम्म, 300. I was more than delighted. हम्म, But then it all stopped. हम्म, Then it all stopped. That's where we were left scratching our heads. अब क्या? हम्म, Because initial adrenaline spark रहता है, rush रहता है, you know, कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. It felt very good. हम्म, Awesome. और मैं 2-2 बजे रात तक बैठे रहा, यार ये थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा, यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, यार इसमें ये डालते हैं, ये फीलिंग डालनी है, ये फीलिंग्स इन्वोक करनी है ऑडियंस के अंदर. ये हम्म, देयर केम अ पॉइंट वेयर आप रिकॉर्ड कर रहे हो स्क्रीन, ऑब्वियसली हम्म, वाया जूम, तो क्वालिटी, वी टुक अ रिस्क हम्म, बिकॉज वी बोथ न्यू एक्शंस लेने अगर हमने बंद कर दिए तो हमारा जो मोटिवेशन है, इट विल डाई आउट, हम्म, द मोमेंटम विल डाई आउट. हम्म, सो वी सेड लेट्स जस्ट गो ऑन विद इट, पब्लिश करते हैं, देखते क्या होता है. एंड ऑब्वियसली इट ब्लू. हम्म, And people were congratulating, you know, this has never happened, oh my god, very good. And it makes me happy, it still does. I feel grateful that you invited me here, but the ambition has not changed. हम्म, And that is clarity, conversations, हम्म, impact. हम्म. These are the three things that I've, you know, measure my podcast: Clarity. conversations and हम्म, impact. हम्म, The person who has come to watch my videos, does he gain clarity out of it from what he came initially? हम्म, यार मेरे को एडमिशन चाहिए XYZ यूनिवर्सिटी में, and I'm talking to someone who's in that university, and the audience is looking at me. हम्म, Through my questions, do they get the clarity हम्म, of what they came for? हम्म. And are मतलब they convoluted तो नहीं था कि ये बोल दिया वो बोल दिया. and are they getting a sort of conversation out of it? Is it just admission कैसे लेना है, ऐसे लेना है? No. हाँ. Are they in the Engaged. frame? Are they engaged? Are they in the frame के, you know what? If I walk up to Nihal tomorrow, हम्म, इसी तरह वो बात करेगा जैसे वो आज यहाँ बात कर रहा है. हम्म, ठीक है. And impact, what impact that video had after you have left it? हम्म, Did you go out and, you know, search the things that are mentioned in the video? हम्म, Did you go out and pursue what you wanted to? हम्म. How did it help? So these are the three things that I measure my podcast with. I'm so sorry I'm going off track. No, no. All right. It's cool. Yeah. It's So very cool. we took our podcast from there. Origin story ये है, and we started in March 2022. हम्म, ठीक है. Online चल रहा था तब सब कुछ. It was very easy for me. But one of the things that podcast taught me was cold emailing हम्म, and how to write those. And the best part, the winning side to that was people would reply.
people would actually reply. For example, there's an alumni of our institute, of our university, Mr. Sharik Chishti. So he did his engineering from computer science in Jamia, and then he went on to pursue IIM from Calcutta. So I was like, why not talk to this guy? You know, he can have stories. Muazzam was the one who first told me, you know, you should talk to this person. And so I sat down, wrote an email. I don't know how he will take it, but I said, you know, this is what I'm doing, and I would really want you to be the guest next. Then we talked to him, and he was super chill. He has invited me to his house, you know, come over, have dinner with me, and he has sort of become a mentor for me. You know, I have his number, I can call him, Sharik bhai, this is what is happening to me. I'm disturbed and this and that. I'm not. No. तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे. So this is how it started, you know, helping people out. You know, you have, suppose Nawaz has a problem related to MBA. How does recording with Nihal help him? You know, and I remember one of your friends, I would like to give Adil the credit, right? Adil pointed out one thing to me. He said, you need to be a hero around your own people. I said, okay, you need to solve the problems of your classmates first. That's how you blow up. Solve the problems of your classmates, then they will recommend you in the department, and the department will recommend you all over the university. It's like, oh, nice. So point number one, thank you, Adil. I'm super grateful to you. And help people. Motive itna hi rakho, it will work out. Just don't keep ulterior motives to yourself कि, you know, इसकी मदद कर देता हूँ. मदद उस भाव से मत करो, लेकिन वो फिर इवेंचुअली आ जाएगा. Might help. लॉन्ग रन में तुम कहीं नहीं स्टैंड कर पाओगे. सो दैट इज इट. दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, helping people out. And that has worked so well for me that people call up and ask me that we would like to be on your podcast. So that I think is a very good, you know, evidence, testimony to what I'm doing. The foundation strong, so it's getting up. Yeah. I have had professors, I kid you not, I have had people, the member of, you know, staff of my department stop me and ask me, "Arey, bahut acha ladka hai. We have seen his videos." So you understand, oh shit, someone's watching me. It's not all going to waste. Although views are down, I really don't mind. I really don't. Because आगे चल के कोई बात करेगा ना, I will be there. Without them mentioning me, I'll definitely be in their stories. Okay, so you're just a student right now. Yeah. ठीक है, जैसे दुनिया कहेगी, you're just a student right Definitely. now. Credibility build करनी है, अभी है नहीं, बहुत प्लेटफॉर्म नहीं है ना? So बहुत सारे challenges हैं उस फेज में जब आपके पास पैसा नहीं है, credibility नहीं है और प्लेटफॉर्म भी नहीं है. बिल्कुल. So how do you navigate that? और ये सिर्फ पॉडकास्टर्स के लिए नहीं, कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, सबके लिए है. Right. So basically 3 challenges हैं. Yeah. No money, no platform, no credibility. Okay. Personal branding की लोग बहुत बात करते हैं. I'm sure you would understand, you are being from MBA. Personal branding, what I have come to learn at a very minute level is how people see you. What does Nawaz think of me? What do I offer? Okay, Nawaz would think, यार ये लड़का जो है ये videos बनाता है. I should approach him regarding videos. So credibility की मैं answer कर देता हूँ पहले. In your circle, what are you known for? ठीक है. So okay, whatever you are known for is your credibility. अब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, प्रोफेशनल होगा, गाली गलौच होगा, वो आपके हाथ में है. You have the power to mold it. Cool. आप 5 लड़कों का ग्रुप है, दोस्त हैं 5, ठीक है, लड़कियां भी 5 लड़कियों का ग्रुप भी हो सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है. So 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 5 इंसानों का, होमो सेपियंस, ठीक है. So and I am one of the persons in the group. So what do they know me for? Do they know me for as being the most studious person? Do they know me for, you know, ये और चीजों में भी रहता है? And that's how people, you know, take work from you. It's a give and take situation, right? How can you benefit the person and how can the person benefit you? Credibility आपकी कहाँ आती है? For example, I choose a niche जिसे कहते हैं, you know, कि जो टॉपर्स होते हैं उनका नीश क्या होता है? पढ़ाई. तो आप सिर्फ पढ़ाई के मुतालिक से उनके पास जाते हैं. बिल्कुल. नोट्स दे दे यार, यार ये नहीं समझ में आ रहा है,
So I think the concept is very clear. How can you become a person that is needed by people? Correct. I'm not saying people pleaser bano. I'm saying how are your skills needed and where are you putting those skills? Okay. For example, this podcast that you're shooting, you being from MBA, I'll give you an idea. You obviously have it. You can talk to startups. I'll help you channelize your marketing or whatever via my podcast. But this is what I'll need from you, right? तो क्रेडिबिलिटी इंसान छोटी छोटी चीजों से शुरू करके बना सकता है. ठीक है, आपके पास क्रेडिबिलिटी आ गई तो यू कैन चार्ज फॉर इट, यू कैन चार्ज फॉर इट. ठीक है, क्रेडिबिलिटी ये है कि एक्स पर्सन सॉल्व्स वाई प्रॉब्लम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नो वन कैन सॉल्व इट द वे एक्स सॉल्व्स इट. वो एक्सपर्ट हो गया. दैट इज द ओनली वे यू कैन चार्ज मनी. Now you become an expert in your field. ठीक है, cool. That is the only way you can charge money. And what did you ask? 3 things you asked. Credibility. No money. No money. So you don't have the money for equipment. Yeah. Then no credibility, which you already answered. And third, no platform. Like nobody is calling you as a guest. Yeah. आपने मुझे क्यों बुलाया? Because you have a certain set of skills as well as a credibility talking people. Yeah. In conversations. So I would say that always start from credibility. ठीक है, मैंने क्या बोला? अल्टीरियर मोटिव्स मत रखो यार, किसी से मत रखो, कभी काम नहीं आएंगे. शो अप फॉर द सेक ऑफ शोइंग अप, फॉर हेल्पिंग आउट. ठीक है, शो अप, बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल. यू नो, इट्स नॉट अबाउट यू गेटिंग एवरीथिंग ऑल द टाइम, इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग ऑल द टाइम. बिल्कुल. दो अपना टाइम दो, अपनी अपॉर्चुनिटीज पास इट ऑन टू पीपल. यू नेवर नो हाउ दे विल कम बैक. ठीक है, दिस विल बिल्ड क्रेडिबिलिटी, बिकॉज and they will see you okay, he's not selfish, he does actually really care about what I'm doing. So give credibility, and then they'll approach you for it, because they will ask, yaar ye main aisa karne ja raha hu, is this right? That's when you know you have built credibility. Cool. Then you can charge money for it, because you have become so good. रही प्लेटफॉर्म की बात, क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे बनाओ, प्लेटफॉर्म आ जाएगा. बट व्यूज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे. स्टार्ट विद द माइंडसेट नहीं आएंगे. इट इज द रीजन दैट I still have the podcast running is because of the fact that we knew views नहीं आ रहे. It is something that we just wanted to help, and we created a platform. यहाँ जाओ, देखो, समझ में आए? गुड नहीं है, talk to me, I'll help. Okay. Doing this, I kid you not, Nawaz, I have been approached to shoot a podcast, a paid podcast. I just could not go. क्यों? Situations, circumstances, you have to let go at times. I have been asked, I have been approached by startups that can you please, we are willing to. But I, in my own understanding, do not have that caliber, right? As you said, money. Money वहाँ से मुझे आ जाती, but I don't want to compromise on the work that I give them. Okay, so you probably wouldn't have been able to deliver the value. Yes. Okay. And that would have made my credibility decline. Cool. So better late than never, right? Cool. So you can almost postpone it. You can say, you know, I'm not there yet, but you can find other people. I don't want to, you know, downsize your value of your brand or whatever by giving, not delivering from my end. So I had to pass it. बाद में करते हैं यार. So that's it. Credibility मत जाने दो. वो गई I तो have सब one question जो मेरे दिमाग में चल रहा है. बिल्कुल. क्योंकि तुमने कहा you had a podcast with your professor and you released it in 2-3 minutes episodes. Yeah. Shorts basically. So अभी I recently uploaded an episode, 36 minutes episode. ठीक है, अच्छी podcast थी, good 36 minutes. ऐसा नहीं कहूँगा कि boring था, चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा conversation था. So question ये दिमाग में obviously मेरे आ रहा है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ, कि क्या मुझे उस एपिसोड को जो अब अपलोडेड है उसको छोटे छोटे पीसेस में करना चाहिए? डू यू थिंक दैट विल वर्क मोर? देखिए, आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेटर फैन बेस देन आई हैव. फैन बेस? अभी कोई फैन बेस बोलूंगा मैं. अभी तो नवाज ऑफिशियली हैज मोर सब्सक्राइबर्स देन मी. सो द ओनली ट्रू जज ऑफ योर ऑडियंस इज यू. ठीक है, I can go to YouTube, you know, watch videos of gurus talking, you know, you should make your video like this, a video like this. Nawaz, I hate to break it to you, it's all trial and error. It's all trial and error. Cool. So you asking me 36 minutes को छोटा करूं,
I would say why not? Why not? But will you gain something out of it? 2-3 minutes क्लिप बना के तुम्हें 36 मिनट से ज्यादा फायदा हो रहा है, डू इट. नहीं हो रहा है, then why? But it doesn't hurt to experiment. So basically time cost opportunity. मेरा टाइम कितना जाएगा और कितनी ज्यादा मुझे उस पर अपॉर्चुनिटी वैल्यू मिल जाएगी. Cool. Cool. And I would say कि इसने अभी कहा कि मेरी फैन बेस ज्यादा है, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा है, बट ऑनेस्टली इसका मुझसे एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो मुझे कॉन्वर्सेशन में दिख रहा है. मैं ये कहूंगा मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा व्लॉग्स की वजह से, ठीक है. एंड ऑनेस्टली आई एम लर्निंग अ लॉट राइट नाउ अबाउट पॉडकास्टिंग स्पेसिफिकली, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू फर्दर, ठीक है. कॉलेज एंड स्पेसिफिकली योर स्ट्रीम एज एन इंजीनियर. आजकल आप इंजीनियर्स को देखते हो, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे. एमबीए भी में मिल जाएंगे, ठीक है. बिजनेस भी चला रहे हैं, कॉमिक्स भी वही है, एक्टर्स भी वही है, हर जगह है, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस में डिवाइड करता हूँ. पहला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में ऐसा क्या हो रहा है कि बंदा हर फील्ड में आके फोड़ रहा है, ठीक है, कि वो किसी भी जगह जो कुछ छू रहा है और फिर अलग ही लेवल का बंदा निकल के आ रहा है, ठीक है. पहला क्वेश्चन तो ये. दूसरा क्वेश्चन ये कि बेसिकली क्या तुम्हें मतलब इंजीनियरिंग के अलावा तुम्हारा कोई और बैकग्राउंड होता तो क्या पॉडकास्टिंग में हेल्प होती या फिर कुछ और फर्क पड़ता या फिर नेटवर्किंग में? तो बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड. पहला मेरा तुम्हारा सवाल ये था कि इंजीनियरिंग, हर जगह इंजीनियर्स कैसे दिख जाते हैं, वो किसी और फील्ड में जाके इतना बेटर क्यों परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल. Okay, so I might get criticized for this, but अरे यही तो टाइटल है, ठीक है, जो बात पे क्रिटिसाइज हो गए. बट वो सिर्फ हमारे देश में हो रहा है. एंड वी हैव क्रिएटेड दिस इमेज ऑफ इंजीनियर्स इन आवर कंट्री कि ये लोग बाकी जगह जाके फोड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं. But you look at people मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. But you look at people outside, you know, who are actually pursuing engineering degrees. उनको तो नहीं हो रही है प्रॉब्लम, right? They're earning good. So why is it? Why does the question even pop कि ऐसा क्यों हो रहा है? Because most of us, even myself included, we come to realize very late in our engineering studies what we actually want to pursue. 11th 12th coaching, ठीक है, IIT नहीं हुआ, oh shit, अब किधर? इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी, अब क्या? अरे यार सब लोग आसपास क्या कर रहे हैं? पढ़ाई. कितने परसेंट पे नौकरी मिलेगी? oh shit, 75. बैकलॉग्स नहीं चाहिए. So you get that mindset, but people tend to forget, and engineering is a very different word. Engineering, I am damn sure, is all about, you know, studying properly. I'm not just saying studying, mind you, I'm saying studying properly. Because since I'm a student and I know what goes on in my course, you have to have a very proper and thorough knowledge of each and every concept, because it affects the world after you graduate. So any person cannot just survive, but sadly what we come to see it, the pressure is so much that what we come to see it as, you know, अब यार अब सेशनल आ रहा है, इसे पास करते हैं, फिर सेकंड सेशनल आ रहा है, इसे पास करते हैं. So instead of studying the course as it is meant to be, we study it for the sake of passing the subject. एग्जाम टू एग्जाम. और 6 महीने मिलते हैं एक सेमेस्टर में, राइट? आप पढ़ सकते हो, लेकिन कितना पढ़ोगे? जब तक आप, मैं बता रहा हूँ, जब तक आप पढ़ के खत्म करते हो, जब तुम्हें समझ में आता है ओ ये नाइस, दिस इज नाइस, एग्जाम्स आ जाते हैं. सो आप एग्जाम्स के टाइम ओ नाइस करते रहोगे और विल यू पास द एग्जाम्स? सो दैट इज द प्रॉब्लम, एंड मोस्ट पीपल गेट टायर्ड ऑफ इट. यार सेशनल्स हैं, यार असाइनमेंट्स हैं, यार अब ये प्रोजेक्ट, मेंटली एनर्जी इतनी बढ़ने लगती है ना, दैट पीपल हैव टू फाइंड एस्केप्स, दे हैव टू have something, an activity, an extracurricular activity of sorts, and then that's where they tend to find their strengths, which they could not since 11th 12th first year second year whatever. ठीक है, जब उन्हें वो strength मिलती है, the moment they get it and when they seize it, that's when you know that something's going on. But फिर वो पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है, क्योंकि उन्हें अब strength मिल गई है अपनी. Who would go to a place that makes you feel so dumb, जिसके लिए तुमने इतनी तैयारी की है? So you have to have things that you can go to. For example, मैं अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा था. My first second year was going very smooth, third year went very smooth, right? But it became monotonous. घर जाओ,
किताबें खोलो, आज ये पढ़ा है, पढ़ो। इतना हेक्टिक रहता है, आप यू कैन नॉट स्टेप आउट until unless you are managing, you cannot step out. कुछ ना कुछ चीज छूट ही जाती है. So I said यार ये तो मैं स्कूल में भी कर रहा था, घर जाना, खाना खाना, पढ़ना बंद कर देना. What am I doing different in college? Why is college there for me? To seek out opportunities, to meet people, get to know people, networking जिसे हम कहते हैं. And then you say कि यार इंजीनियरिंग के लड़के लड़के ऐसे ही होते हैं, you know, they don't talk to anyone. Because उन्हें समझ ही नहीं आता करें क्या. इतनी प्रेशर इतना रहता है that अभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे इंजीनियरिंग में. तुम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओगे या तुम अपना कोर्स कंप्लीट करोगे. सही बात है. तो वहां पे एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स इन योर ग्रेड्स. एंड ग्रेड्स इन इंजीनियरिंग आर, आई टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थॉट द ऑपोजिट. पत्थर फेंक के मारोगे इंजीनियर को लगेगा, करेक्ट. इतना कंपटीशन है, तुम्हारा ग्रेड 0.1% भी कम हुआ तो फिर. अच्छा, यूनिवर्सिटीज में बाहर एडमिशन लेना है, फर्स्ट क्राइटेरिया ग्रेड्स. अब इंसान उनके पीछे भागे या ओवरऑल पर्सनालिटी बनाए. दिस इज द डिलेमा. दिस इज द डिलेमा विद ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. कोडिंग सीखनी है, अरे शिट लैंग्वेज सीखनी है, अरे इंग्लिश पे ध्यान देना है. कैसे? अरे यार इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अरे यार छोड़ो यार, एग्जाम से पहले पढ़ लिया. दैट्स व्हाट वी क्रिएट. एंड इट इज अ कंप्लेन ऑफ माइन, बिकॉज़ दिस कंप्लेन टू whom? To the people out there, you know, क्योंकि मैं बाहर तो नहीं देख रहा हूँ ये सब. बाहर तो people are actually, you know, happy. Okay. तो यहाँ बाहर outside countries, you know, people pursuing an engineering course, they may not show it कि यार, you know, raid लगी हुई है यार, नहीं हो पा रहा. But these go out and have an exposure to what the field offers. हमारे exposure नहीं है. You know how difficult it is to get an engineering internship. Because you are a beginner, no one is going to come and, you know, ये गाड़ी का इंजन है, आओ देखो जरा. No one is going to do that for you. You have to have connections. And no one is teaching you how to build connections. No one is teaching you how to land an internship. You are solely on the basis of your department कि वो internship दिलाएंगे. In the end, department कहता है sorry, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? So that's it. It is difficult. It is difficult. Okay. So I थोड़ा सा tangential है, but क्योंकि मुझसे लोग questions पूछते हैं, so I would really like to like answer these questions कि कैसे जामिया में एंट्रेंस का एडमिशन होता है, प्रोसेस क्या है, CUET का क्या. तो इंजीनियरिंग में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस बता दो यार. यार उसका प्रोसेस ये है कि 11वीं 12वीं से जेई मेंस की तैयारी करो. ठीक है, 200 चाहिए. ठीक है, 200 चाहिए ना मेंस में. ठीक है, हाँ मेंस में अच्छे खासा तुम्हारा परसेंटाइल अच्छा आना चाहिए. 92 93 परसेंटाइल आना चाहिए फॉर यू टू गेट जामिया. एंड देन यूजुअली जामिया में लिस्ट रिलीज होती है. यूजुअली इट इज 7000, बट 7000 में तो कौन ही लेता है. सीट्स कितनी है? सीट्स 360. ठीक है, सो फिर वो और लिस्ट निकलती हैं, 5-6 लिस्ट निकलती हैं, तो यूजुअली लोगों का हो जाता है. बट इट इज वेरी टफ गिवन दैट इट्स 5% हुआ यार, गिवन दैट 7000 में से. ठीक है, गिवन दैट इट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्लस लोगों को जामिया का नाम काफी पता है. सो कंपटीशन इज टफ. जामिया इज आल्सो अ टैग. इट्स अ टैग. IIT टैग है. इट्स जामिया एक टैग. तो यार द प्रेशर इज रियल. द 92 93 परसेंटाइल मारो भाई, 94 मारो, लेकर आओ नंबर और करो. यू हैव टू गिव जेईई मेंस, यू कैन नॉट स्लैक ऑन इट. और एक की कौन-कौन सी ब्रांचेस है और मतलब हायरार्की क्या है ब्रांचेस की? बेसिकली 5 ब्रांचेस है. आई वुडंट गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ, ठीक है, CS सबसे ऊपर होगी, हायरार्की वगैरह, बट या CS, फिर इलेक्ट्रिकल है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग. दीस आर द 5 कॉमन ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया व्हिच आर अवेलेबल. वही जामिया में भी है. ठीक है, हर किसी का कट ऑफ ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट इट्स यूजुअली हाईएस्ट फॉर CS. बिल्कुल ऑब्वियसली. नाउ प्लेसमेंट्स. या placements for my own department, what I have seen is majority of them have gotten placed. I cannot give you a number because they were seniors, and I do not have that data. But for my own mechanical engineering department, I can say that the highest that they have gone is 14 LPA. 14. Yeah. And that is for non-core branch, you know, non-core job. Core job as in a factory, in a proper manufacturing plant. In mechanical 14. Yeah. ठीक है. This is for consulting. People who have gone to consulting and stuff. Non-core jobs. People who have gone to core jobs, the max they have achieved in mechanical engineering is 9 to 10 lakhs. 9 to 10. Average मतलब 9 to 10. Yeah, 9 to 10 lakhs. ठीक है. Okay. For the highest for computer science that it has gone is, I think, 19 LPA. 19 LPA. Which according to Jamia, I would say is a lot.
because I know private universities बाहर बहुत ज़्यादा दे रही हैं, 1 crore जा रहा है and 50 lakhs जा रहा है, but for Jamia 19 lakhs is a lot. So that's all the data I know currently. Cool. Networking, events, culture, उसके बारे में थोड़ा सा highlight. यार हमारा since mechanical department, it's an engineering department, so emphasis academics पे ज़्यादा होता है, as I just said. So there are not a lot of opportunities for you to step out and involve yourself. I would highly recommend joining societies, engineering societies. As I said, I'm a part of a Jamia society. की है. Yeah, as a society of automotive engineers, American Society of Mechanical Engineers, but they are more towards the technical side. We do have cultural events, we do have webinars and of sorts, but I would really suggest that if you're coming to Jamia, don't just restrict yourself to one department. क्लास में मत बैठो सिर्फ. ठीक है, मेरा दोस्त नवाज है, and he is not from engineering department, but I had to take that initiative of going out and meeting people. I would not be sitting here had I been just studying. बिल्कुल. That's it. बिल्कुल. कुछ बड़े इवेंट्स में गेस्ट वगैरह सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर? यार the most that I have seen is Ankur Barikwa and stuff in TEDx वगैरह में ही usually लोग ज़्यादा आते हैं. बहुत जल्दी होने भी वाला है. बहुत जल्दी होने वाला है. You should definitely come and watch it. ठीक है. As such मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना कुछ खास नहीं. एक और क्वेश्चन है, आंसर करना ना करना तुम्हारे हाथ में. मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप. I would choose not to answer. I would choose not to answer because फिर ये बहुत लंबा डिस्कशन है and I 4 पढ़ा है ना 4. हाँ, and I don't want कि जो मैं कहूँ वो misconstrued हो जाए. तो मगर इस बंदे की प्रायोरिटीज देखो. Come and experience भाई, you will know. Atom TN 7VV. 14 क्वेश्चन. Come and experience for yourself. मैं कुछ नहीं बोल सकता. I am so sorry. I'll get cancelled. अभी बहुत यंग है हम अपने करियर में. I'll get cancelled. To get cancelled. Yeah. Okay. So now. So you asked me another question also. I think I'm forgetting it. पहले तो engineering related था. Second क्या था? कोई नहीं, हो गया. उसके बाद नहीं देखेंगे. फिर उसके बाद I have. What does the future of decoding with Nihal look like? Prosperous. Prosperous. Inshallah. Going to the details. Going to the details. So I had a major drawback, kind of a setback, and I'm happy. So my co-founder Mozam Farooq obviously had to graduate. So he had to take a step back. Yeah, he had to take a step back and focus on other stuff. So is it like a partnership? I wanted it to be, but now I am the sole person handling it. Okay, and what I do really am grateful for, and I mean my heart goes out to him, is he was there to support my wings. कि यार तू कर. Let you fly. Yeah, and I think that is what is needed to a person who wants to break in with the idea. बिल्कुल. So currently I am running it solo, and I am shifting to educational podcasts, usually around admissions and opportunities regarding educational fields. तो उसके अलावा if I intend to ever cross boundaries with other stuff, I might as well, but right now it's all going to be educational. Okay. Yeah, experiences. And there's a lot of money in edtech, so they might, if they collaborate with you, there's a lot of money. They just throw money like this. Who knows? बिल्कुल. So now we have the coffee with Karan round. I'll be asking him some fun questions, and let's see how spontaneous Nihal is. Let me open it. कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. कट कर देना. The first question of the fun round is, podcasting के लिए कितनी बड़ी ईगो चाहिए? I would say 0. नहीं चाहिए. मत रखो. नहीं चाहिए. नहीं, स्टार्ट करने के लिए अपने आप को स्क्रीन पे देखना, अपने आप को पब्लिश करना, खुद बोलना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना. नहीं, I would still say 0.
क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे देखोगे कि ईगो, तो आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छा माइंडसेट रहेगा, बिकॉज एज आई सेड आई हैड माय सेट ऑफ फियर्स। यार बोलूंगा कैसे, यार एडिट कैसे करूंगा, बैठ के कैसा लगता हूं मैं। यू हैव टू रियलाइज दैट द थिंग्स दैट यू आर वर्किंग फॉर आर ग्रेटर देन योर फियर्स। तो वो जब तक तुम रखोगे, आई डोंट थिंक ईगो विल आसपास कहीं भी आएगी। सही बात है। इफ द फियर इज हायर तो यू वोंट ट्राई, और अगर फियर नीचे आ जाता है और तुम्हारा अटेम्प्ट कि मुझे तो मारना है, अटेम्प्ट कुछ भी हो, तो फिर तुम करोगे। वेरी नाइस। ओके, सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव हैड विद द पॉडकास्ट इज बेसिकली विद टेक्निकल स्टफ। जैसे रिसेंटली आई शॉट एन एपिसोड, लास्ट वाला जो एपिसोड था उसमें पूरे एपिसोड में मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे में ब्लर हूँ क्योंकि मैंने फोकस में नहीं लिया। राइट। सो ऐसी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज जो तुमने कभी फेस करी हो? अरे बहुत। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर पॉडकास्ट स्टार्टेड, आई न्यू कि पॉडकास्ट अगर स्टार्ट करूंगा कभी मैं, तो मुझे कैमरे पे आना पड़ेगा। एंड आई हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, बट आई वाज डिलाइटेड, यू नो व्हाट इफ आई कुड प्रिजर्व माय सेल्फ, यू नो समवन कुड वॉच मी और आई वुड वॉच माय सेल्फ ओवर द इयर्स। देखा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कैमरा रखते हैं, अपना फोन रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने आप को। ओके, फोन रखा, रात का 1 बज रहा है, फर्स्ट टाइम आज करूंगा, फर्स्ट टाइम। ओह नाइस। रखते हैं। सो घर पे सब लोग सो रहे हैं, आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू एम्बैरेस माय सेल्फ। मैं हेडफोन लगाता हूँ, कान में लगाता हूँ, हेलो एवरीवन, प्रेस रिकॉर्ड। So as I was saying, and we need to see that video. I really don't have it right now. I have it stored somewhere, but so reels was blowing up. मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त चीज है. What if I could get my message across through reels? कुछ नहीं आता है मुझे, कुछ नहीं आता कैमरा कैसे सेट करते हैं, बट मैंने कैमरा सेट किया, निकॉन का कैमरा था वो सेट किया ऐसे. I had one lying around, घर पे होता है, you make it work. फोन का फियर तो मैंने अनलॉक कर लिया, कैमरा फियर वाज रियल बिकॉज नाउ द कैमरा इज, अरे क्या बोलना, शिट क्या बोलना, बनाया मैंने किसी तरह बनाया. दैट रील क्रॉस्ड 3000 व्यूज एंड आई वाज ब्लोन. वाओ, आई वाज ब्लोन. आई वाज लाइक भाई 100 फॉलोअर है मेरे, 3000 लोग ने देखी है. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कर सकते हैं, इट इज इजी. नहीं पता था, I did not have a plan. I just shot videos with what I have always wanted to say. People started commenting, oh nice message, oh damn, लोगों को चाहिए. So that's when, you know, but then I realized कि reels is not for me. वो करके पता चला, because I cannot speak in short form of content. मुझे लंबा content चाहिए. That's when I was video podcast लाते हैं. Cool. That's how I started. I have a very similar experience. बैटरी बस चलो खत्म, रैप अप कर रहे हैं. You have a similar experience? मैं एक सेकंड पहले मैं आउटरो शूट कर देता हूँ. ठीक है. So हाँ पहले आउटरो शूट कर देता हूँ if in case. So that's all from the episode today. I had a wonderful experience chatting with Nihal. So please go to his channel Decoding with Nihal. Subscribe. यहाँ पर भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट. निहाल, definitely please do subscribe to the Aeenak podcast and subscribe to me also. Shameless plug. You'll find the links in the description, and just support Nawaz in what he's doing. I'm sure he has a lot of things that will come. So thank you again. Thank you Nawaz. Thank you. Cut. चलो ठीक है. I'll go back. Yes. 2021 में I started learning Arabic. ठीक है. Right. So I realized कि, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन I realized कि यार जब मैं सीख रहा हूँ, if I take the responsibility by teaching others, so मेरी learning पे मुझे एक responsibility मिल जाएगी. ठीक है. बहुत. तो उस वक्त मैंने reels बनाने की कोशिश करी थी, and I could not shoot even one. The struggle is real. अपना नाम नहीं बोला जा रहा था क्या? Struggle is real. मैं बता रहा हूँ. मुझे याद है मैं स्टोर में खड़ा हुआ था, रेड शर्ट पहना हुआ था, and I could not even say कि मैं नवाज अली खान हूँ. Now imagine this. 21 ईयर वाला नवाज अभी जाके मिलेगा, अभी तुम जाके मिलोगे. 23 वाला नवाज 21 वाले नवाज से मिलेगा. 23 वाला निहाल 20 वाले निहाल से जाके मिलेगा. They will be more than delighted. Because you know what? Good decision. I'll be like, I'll hug him out and say, यार हो जाता everything है, will कर be भाई, alright. please, but just keep doing. Just keep doing. Just keep doing. Just keep doing. Okay, one more fun question. If you could podcast, if you could invite a guest from the entire history, ठीक है, आज तक की, who would be? There are 2 people who come to my mind. 3 actually. 3 actually. मेरा क्वेश्चन 1 का था, but
लिबर्टी है? I'm so sorry because अरे लिबर्टी है, करो. this stems from my religious background, and that would be the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बिल्कुल. I cannot explain. I would want to sit with him. बिल्कुल. How did you? Because there are too many questions we too could many. ask you. And we have nothing we could say to him. But we would like to. He would know what I have to ask. He would know. I just know it. He would know. I was like, I will just look down. Absolutely. Yeah. Second would be Shah Rukh Khan. That I had Second another would be- question कि अगर alive में, but तुमने पहले ही कह दिया. ठीक है. Second Shah would Rukh Khan, be obviously. Shah Rukh Khan. बहुत मजा आएगा उसके ठीक है. साथ. Third. I don't have words to describe that man. बिल्कुल यार. I am not a Shah Rukh fan, mind you. His films. ठीक है. I am not. But I am a fan of who he is and what he preaches without even preaching. Absolutely. You do realize that. And you see, oh my God. Oh my God. Definitely. And third would be my Nana, my grandfather from my mother's side. Because growing up, I have seen him as the definition of hard work. I am nowhere near. I can talk lengths about him. It's just his will, the sheer will to work hard, and at the same time enjoy life to the minute details. Gotta give it. I want to meet him. Gotta give it to him. He passed too early for me. But I would have really, made him sit on my podcast. ये बताइए, वो बताइए, because the definition of hard work, that is the man. That is the man. So there goes 3 people. Okay, one more question. When you watch your podcast, now or old, is it like an ego boost or like a cringe experience? It has, so for me, it has come down to analysis now. Okay. The cringe part is over. Okay. Because I don't treat it as cringe. I treat it as excitement. What? I wanted to do this and I did it. Absolutely wonderful. NIHAL RAO, you have done this. You can do other things also. Cool. Okay. So now I approach my podcast with an analysis point of view. अच्छा इसमें ये हो गया. अच्छा okay इसमें ये करना चाहिए था. Right इसमें ये. Oh अच्छा उसको email मैंने गलत भेज दिया. उनको मुझे ऐसे बुलाना चाहिए था. Oh right this that. So it has become an analysis for me. But I also keep in mind that I do not make my podcast too focused on just analysis. इससे करने से ये हो जाए. नहीं, कभी-कभी it is also about having fun. शारिक भाई के साथ it was super chill. He was super cool. He shared his stories in IIM and he said Swiggy का जो founder है, he used to be my wingmate in hostel. I was like, damn. And to people who don't know, I had written a post about it. So उस पे काफी क्लाउड मिला मुझे, बहुत लाइक्स कमेंट्स आए. फिर मेरे पास एक दिन ऐसी नोटिफिकेशन पॉप होता है, some XYZ person had liked my. I went. तो मैंने सोचा मैं देखता हूँ किसने लाइक किया. The Swiggy founder had liked it. I was blown. I was on cloud 9. Oh my God. That is this happening because I decided to take action. So that's it for me. You just do what you want to do. Okay, one final piece of advice for me that I should be focusing on moving forward with the Aeenak podcast. Don't get too much into the nitty-gritties of finding a niche because I have fallen into it. ये एक रास्ता पकड़ लेते हैं, इसमें चलते हैं. नहीं यार. We are young, we are still building our craft, so it is important we talk to a lot of people and then decide हमें क्या चीज किस फील्ड में pursue करनी है with our podcast. ठीक है. दूसरी चीज, don't worry about the technicalities right now. It's a learning phase. Trial and error करो, experiment करो, views की चिंता मत करो. Just work on bettering your craft. बिल्कुल. ठीक है. Views आ जाएंगे. Inshallah. Are you solving a problem? That is the question. बिल्कुल. Treat it as a startup. Tanmay Bhatt has said, treat your YouTube channel as a startup, and that's what I do. Treat it as a startup. Wonderful experience. You are so articulate. मैं सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, but I really love the way you articulate things, and you have been analytical about podcasting and other things in life. Thank you so much for being here. Thank you, Nawaz. We'll inshallah shoot sometime again. Invite me.
मैं सामने से पूछ रहा हूँ, प्लीज इनवाइट मी। Inshallah, I soon. love being Like on podcast. like this was the first season that I'm currently Definitely, building. definitely. Inshallah, as soon as this is over, the first phase. In the second phase, I'll be inviting you again. So I'll be sharing all the links to his work, to his LinkedIn, to his YouTube channel in the description. Please check it out, and we'll meet in the next episode. Assalamu alaikum. Much love, guys. Bye bye.